I'm Lubna Shakoh. I'm the founder and the president of Hope Uplift Foundation. I started this NGO 23 years back, and I'm so happy that Allah has chosen me for this project, and I am doing so much for it. I am really blessful. Number one. Number two is that I even in 24 hours I don't have even an iota of time to think about anything else except of pleasing my Allah, and I think this is the blessing, the best blessing on me. And I think this is the dua of my parents and my elders. So, Rabbana taqabbal minna, thank you very much, Allah, and accept my deeds. Now, about my journey, actually, I was studying in Canadian College, and throughout, I was the best debater there. And of course, in my schools also. So, I didn't know at that time that all this is going to happen because Allah wanted me to talk and to speak for His people. At that time, I realized that it is just because my mother was a debater, so I am also a debater. But no, Allah has His own future plans for everyone. So at that time, jab I was married. Before that, my father was a secretary of social welfare department, and on our table every day we had a lot of chats on opening up of the Kashana for it's a beggar's home, and then Behbood for industrial center for women all around Pakistan. So it was all going on here and there, but it was never ever penetrating in me. But then I realized that when I was married, one day, achanak, a maid of mine came to me and she said कि ma'am आप मेरे घर मेरी बच्चे की birthday attend करने आएंगी. It was a very exciting thing for me कि हम गरीब इलाके में जाएंगे, और I took my children and I took the presents and the ration and I went there. And let me tell you now what happened there actually. I slept there, though the rain was there 4 days back. It was a slush place and it was so close to my house. I used to live in X block Ghoda Chowk, which is called in those days, and still it is called, the model colony. So there were a lot many people who were living there. All our maids used to come from that place to defense. So I slept there, and later on I came home and I realized that this is not going to work. If I would have been born there then, so I thought I must do something for them. And the best thing came into my mind was that I must bridge the relationship between the rich and the poor. And I was, mashallah, quite successful in that. Because I realized that what must be their feelings of those people who used to come to our house, leaving their unattended children there and caring for our children. This is too much for me to think of like that. Thank God it is a thanking thing that I started this, because I really thought that if I would have been born there, I would have been a miserable person, not even having the basics of life. So having this in mind, I called my friends, I shared my dream, and I told them that please let's be my member, and I want to start an NGO named with the Hope Uplift Foundation. By the name, you must realize that I wanted to give hope to the people and then uplift them. We are the second largest NGO of Pakistan now, after 23 years. We have the 10 years audit report with us, with the best audit company in Pakistan. We have all those certifications which an NGO needs, and above all, the best part of our NGO is that we are doing all that which any NGO doing specifically for one purpose. We are doing all of it in one NGO. You name it and we are doing it. We are helping with the water program, we are doing microfinance, public assistance, hunger relief, health, women empowerment, plantation, animal care, you name it and we are there. So once I received a call, I tell you the gist of it now. Once I received a call and there's a man who was of 60 years of age, और वो रोने लग पड़े. और उन्होंने कहा कि I was a wagon driver and now I cannot see because I had cataract in me and I had 3 kids. So can you just give education to my kids? This is only I want. तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे NGO में आएँ. He came up and जब वो आए तो हमने realize कराया उनको कि we can give you a job. He got the job as a guard in a school. उनकी बीवी को हमने आया लगा दिया. उनके बच्चों को हमने स्कूल्स में दाखिल करा लिया अपनी, और उनके जो बड़ा बच्चा जो था उसको हमने कॉलेज में दाखिल करा लिया फ्रॉम द स्कॉलरशिप प्रोग्राम. उनके सारे बच्चों को हम लोगों ने होप अपलिफ्ट वेलफेयर शॉप से सामान देना शुरू कर दिया. उनको राशन प्रोग्राम से राशन देना शुरू कर दिया.
और उनको माइक्रोफाइनेंस से मोटरसाइकिल ले दी, और आप यकीन करें कि विद इन नो टाइम दे बिकेम अ नॉर्मल हेल्दी फैमिली. वी अपलिफ्टेड देम बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. और थोड़े दिनों में उनकी बीवी ने मैट्रिक किया हुआ था और वो उस इलाके की इलेक्शंस में खड़ी हुई और वो भी जीत गई. और फिर उनको कैंसर हो गया और वो इमरान खान के हॉस्पिटल में शौकत खानम में ज़ेर इलाज रहे. और जब वो ज़ेर इलाज थे तो मैंने उनसे, उनका एक दफ़ा मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैम मैं मरने वाला हूँ. सिप्तान शाह उनका नाम था. मैं मरने वाला हूँ लेकिन अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि होप अपलिफ्ट फाउंडेशन मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को संभाल लेगा. सो एक ख़ानदान को ही संभालना आपको पता है पूरी उम्मत को संभालने के बराबर है. तो आप इस तरह देखें, हमारे पास ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं रोज़ माशाल्लाह. और अभी हमें DHA ने 4 कनाल ज़मीन दी थी, हमने उसके ऊपर के ब्लॉक डिफेंस में सेंटर ऑफ DHA में हमने उसके ऊपर अपना स्कूल बनाया है और उसमें हमारे पास 2000 बच्चा पढ़ रहा है. उनकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है और हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, कुरान एज वेल एज computers, home economics, you name it, and all are engraved in one combo teaching platform. और माशाल्लाह हर बच्चा जो है जब वो बाहर निकलता है तो उसको जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको हम अलहदा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं प्रोफेशनल, और जो दूसरे बच्चे होते हैं जो नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहते उनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स देती हैं. किसी को पार्लर खोल के देती हैं, किसी को बार्बर शॉप्स खोल के देती हैं, किसी को हट्टी खोल के देती हैं. सो द थिंग इज़ दैट हम होप अपलिफ्ट फाउंडेशन इस वक्त PCP के मुताबिक हम लोगों ने 5,75,000 ख़ानदानों को 3 साल में टच किया है. सो आप सोच सकते हैं हमारा मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है. और वी वुड लव ऑल ऑफ़ यू टू कम अप एंड हेल्प अस and also take help from us for anyone who is around you who needs it. हमारा वेबसाइट है www.hopeupliftfoundation.org और UN नंबर है 0304 111 776. एंड बस मैं आपको लास्ट यही कहूँगी, डोंट वेस्ट योर टाइम, एवरीबडी आउटसाइड अराउंड यू नीड्स यू, और गिव योर टाइम टू द कंस्ट्रक्टिव way so that you can feel happy. And if you need any platform like Hope Uplift Foundation, our doors are open. We are basically women empowered NGO. हमारे पास women empowerment vocational centers भी हैं, हम उसमें ट्रेनिंग देती हैं और उनको सिलाई मशीनें देती हैं. उसके अलावा हम लोग सारे NGO में हमारे पास women ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं और हमारे पास टीचर्स 374 टीचर्स हैं, all women, आयाज, स्टाफ. सो हमारे पास, आप सोचें कि हम चाहते हैं कि जो औरतें घरों में बैठी हुई हैं वो बाहर निकलें और वो काम करें और उनका वो हमारे पाकिस्तान को अपहोल्ड करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इतना इस वक्त नहीं है कि वो खाली एक ख़ानदान जो है जिसमें गुर्बत है वो खाली एक बंदे के ऊपर बैठ सकता है, मेल के उसके ऊपर. सो women they have to come out and help him, help their family. So we are all trying to help everywhere we can. Thank you very much.